हमने बहुत बार देखा है कि जब हमने कोपा का प्रोसेस यूज किया, कोपा की रिपोर्ट यूज की, सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, एसएपी भी, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, कोपा सब कुछ हमने इम्प्लीमेंट किया, एंड जब हम कोपा से प्रॉफिटेबिलिटी की रिपोर्ट निकालते हैं और कोपा की रिपोर्ट को हम देखते हैं तो वो रिपोर्ट हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसका मेन रीज़न होता है कि जो कोपा से जो प्रॉफिट आता है और जो फाइनेंस का जो प्रॉफिट होता है, ट्रायल बैलेंस बेस्ड ऑन द P&L एंड ऑल, वो दोनों का प्रॉफिट आपस में कभी मैच नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा भी होता है कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है कोपा में अलग दिखती है, फाइनेंस में अलग दिखती है। ये प्रॉब्लम भी मुझे कई बार फेस हुई है कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो हर महीने फ्लक्चुएट करती है, फाइनेंस में भी और कोपा में भी। तो फ्रेंड्स, इसका जो की रीज़न होता है कि क्यों हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इतना फ्लक्चुएट करती है, क्यों हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लोग स्टेबल नहीं रख सकते, जबकि हमारा सेल हर महीने स्टेबल रहता है, हर महीने एक लेवल पे हमारा सेल चलता है, हर महीने एक लेवल पे हमारा ऑपरेशन चलता है, उसके बावजूद भी क्यों हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इतनी फ्लक्चुएट होती है या हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना फ्लक्चुएट होता है। ये जो की रीजन्स होते हैं, इन की रीजन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें फिक्स करना होता है वो होता है रिकन्सिलेशन करना बिटवीन द कोपा COGS, कोपा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कोपा प्रॉफिट विथ आवर FI प्रॉफिट। अगर इन दोनों को हमने सिंक में लेके आ गए तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो स्टेबल रहेगा और आपका जितने भी आपने कोपा की रिपोर्ट आज तक बनाई है, जो कोपा का मॉड्यूल इम्प्लीमेंट किया है, ये आप प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। ये सबसे की प्रीरिक्विजिट होता है कि यूज करना है अगर कोपा को आपको, तो फाइनेंस और कोपा का रिकन्सिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा किस तरह से फाइनेंस और कोपा का जो रिकन्सिलेशन है वो करेक्ट होगा। तो मैं आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस कुछ रिपोर्ट्स के बेसिस पे और कुछ नंबर्स के बेसिस पे शो करूँगा। मैं अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। बिफोर आई गो ऑन द रिकन्सिलेशन ऑफ द कोपा एंड दिस थिंग्स, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कोपा के बारे में, क्योंकि हाना में कोपा एक सबसे पावरफुल टूल है, जैसे मैंने आपको भी बताया, जिसमें कि हमारा बुक्स अकाउंट्स टैली करना हमें फाइनेंस के साथ, कोपा के साथ बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट दैट हम कोई रिपोर्ट कोपा की यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो इनके अलावा एक और एक्स्ट्रा फीचर हमें मिला है कोपा के अंदर में, जो कि अकाउंट बेस्ड कोपा में हम लोग 3 एडिशनल क्वांटिटी का यूज कर सकते हैं, 3 एडिशनल क्वांटिटी अपार्ट फ्रॉम आवर बेस क्वांटिटी। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडिशनल फीचर। ये हो सकता है मैं आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, बट ये एक फीचर है, प्लीज़ आप इसको नोट करके रख लीजिए। अब मैं कंपेयर करता हूँ अकाउंट बेस्ड कोपा और कॉस्टिंग बेस्ड कोपा। कॉस्टिंग बेस्ड कोपा ECC में हम यूज करते थे। अब हाना में कोई भी कंपनी या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग कॉस्टिंग बेस्ड को यूज नहीं करते हैं। कॉस्टिंग बेस्ड इज अ old version of COPA which was there in ECC but not in HANA. Recently I come across few of my customers who are still using costing based COPA even in HANA system. So we have always recommended to use account based, because account based is the process which will be reconciled with our financial trial balance. So now these are the differences between your account based and cost based. So the different timing and different incidents at which the COPA is updated. In account based COPA, if you see, the COPA data will directly update when you are delivering the goods and when you are billing the goods, which is not there in costing based COPA, because in costing based COPA the entire value of COGS and sales get flown on the billing time. So this is one of the biggest difference and problem creator in the costing based COPA. So that's why we are using more of the account based COPA. Now when I comes to on the reconciliation between the account based COPA profit in FI books and COPA books, even if we are using the account based COPA, there are reconciliations is required. So this is how we should do the reconciliation. For example, the sales is always reconciled between the finance and COPA. COGS, the different split of the COGS GL between the raw material cost, activity cost, overhead cost and other cost are reconciled with the account based COPA GL of COPA and financial GL. When it comes to the Autopost account, so this is one of the major area of the kind of a concern many of the organization has. Autopost accounts are such accounts, for example the
consumption of material, consumption of stores, consumption of chemicals, COGM, COGS. These are the Autopost accounts, and we really face a tough time in reconciling and making it nullify the Autopost accounts. Because of the Autopost accounts, many a times the financial P&L shows huge balances, and literally people are struggling ki how to square off that Autopost accounts. And in some cases, because of that Autopost accounts, the P&L get inflated or deflated with a huge numbers, and the reason of those are really not known to any of us. So we, with the help of this reconciliation between the FI and COPA, we help to decode and decipher the problem of that reconciliation between your COGM, COGS, SAP Autopost accounts. All those things will be sorted out and cleared, and with this your books of accounts in your financial books, your COPA books will be very neat and clean, and you do not have to bother when you are facing the auditor maybe at the quarter end, year end or half year end. You will be very confident because the main pain point of reconciling the balances of SAP Autopost accounts is now resolved. If you follow this screen, I can show you that SAP Autopost accounts are these, like raw material, PM consumption, SFG consumption, and secondary cost elements, which is the activity cost and production variance account. The sum of all these accounts should be nil. If not nil, then we know the reason why it is not nil, and we can help you to fix that particular reason once for all. After the Autopost accounts, we can go to the indirect overhead. We can directly allocate the indirect overhead from the financial books cost centers to the COPA, and if any non-operating GLs are there, for example the deferred tax, Ind AS adjustments, these things we remain put it in the financial books, and we intentionally don't want to take it to COPA, and we can consider this as a reconciliation balance between the financial trial balance profit and COPA trial balance profit. So this is how the entire reconciliation should be there in our COPA and FI books. Now I'll show you some of the reports which we have created for few of our customers. So when you see the financial trial balance number, so this is how the report we create for the financial trial balance, and this is the operating profit without overhead, for example 114 million. Okay, based on this NSB and based on this breakup of the COGM, you can see here my operating profit 114 million is there, and these are the basically the columns we created for the purpose of reconciliation of your financial profit to COPA profit. So for each column there is a reason for that, and each column represents some numbers for the reconciliation purpose. So this is the financial trial balance profitability report. Now if I go to the COPA, in the COPA also, if you see the last number, it is 114 million, which is the COPA report and reconciled with your financial trial balance 114 million 002, and this is what the 114 million 002. So this is what the reconciliation there between the financial books and COPA books. Once these numbers are reconciled, then you are very comfortable. You can use your COPA report with any of the slice and dice, by customer, by product, by division, by country, by channel, and no one can question your COPA report in terms of the correctness of the figures, because the figures are reconciled and tightly reconciled with your financial books. So this is what we can deliver, and we can solve the problem of your SAP Autopost accounts problem, COGM, COGS reconciliation problem, and on top of that reconciliation of your finance profit with COPA profit. So this is what the complete solution and picture we can give the clarity for you, so that you can face your auditors with very confidence. Thank you.